My name is Dr. Muhammad Habib Qazi. This lesson is about conducting focus group and observations. These two data collection methods are qualitative data collection methods. So, first of all, focus group interviews. Focus group interviews involve a small group of individuals discussing a specific topic. Of course, topic is that of your research. And of course, you have a set of research questions. For those research questions, you need to collect data, and that requires a group of individuals. Focus group interviews are always guided by the researcher, and it's very important that the researcher knows how to keep the flow of interaction going. Example could be a focus group on public perception of a new policy, call it educational policy or anything, where the group dynamically discusses their views. The role of a researcher is that he or she moderates the discussion, facilitates the conversation around the topic, and it's the responsibility of the researcher to ensure all participants contribute. To conduct focus group, the researcher needs to take certain precautions. The most important precaution is he or she is not allowing any individual to dominate. इसमें ऐसा मुमकिन है कि आपके ग्रुप में जो लोग हों जिनका आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं तो उनमें से certain individuals may be very quiet. So in the presence of a dominating individual, they may not be able to participate and contribute to what you want them to contribute to. तो आपने क्वाइट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी जो इनपुट है उसको इंश्योर करना है because everyone's opinion in a focus group matters. Focus group there are certain advantages and of course disadvantages. So advantage सबसे बड़ा ये है कि focus group can generate diverse perspectives and insights. Why? Because there are so many individuals participating simultaneously in conversation. And it's an extremely efficient way of gathering data from multiple people simultaneously. आप इकट्ठे उनसे इकट्ठे एक मजमे में उन्हें बिठा के आप उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और efficiently डेटा कलेक्ट हो रहा है. Disadvantage, जैसे कि I mentioned earlier, it can be dominated by a few vocal participants. और फिर ग्रुप डायनेमिक्स होते हैं वो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आपने जहाँ से उस ग्रुप को जिसका आप इंटरव्यू किया है उसे आपने जब इकट्ठा किया है तो उनमें पहले से ही कुछ लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हों और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी जो लोग हैं वो कुछ लोग वो उस तरह फ्रीली पार्टिसिपेट ना कर सकें. तो यू नीड टू टेक सर्टेन लाइक प्रिकॉशंस इन दिस रिगार्ड. उसके बाद है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस as a research tool is also an efficient way to collect qualitative data. Observations is of two types. One is direct observation and other is participant observation. जो आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें रिसर्चर्स tend to systematically watch and record behaviors, interactions, or events in their natural setting. अब ये natural setting कुछ भी हो सकती है. For example, you're conducting a research in a school setting, so that's your natural setting. तो आपने observe करना है और जो participants हैं उनकी जो गुफ्तगू है उनके जो behaviors हैं depending upon your focus of research आपने उन्हें record करना है. Direct observation में researcher सिर्फ observe करता है. Researchers do not interfere in the proceedings. जो teaching हो रही है या anything for that matter, so you don't interfere basically in the proceedings. You just observe, record. आप observation के लिए you can also use field notes, you can use checklists, and as of course as I mentioned, you record conversation. So it could be audio recording or video recording. So there are advantages and disadvantages of direct observation. So advantage direct observation का ये है कि it's less intrusive because you are not participating, you're just observing, recording.
एंड एनवायरनमेंट रिसर्च का एक नेचुरल सा है, आपका जो डेटा जैसे आप कलेक्ट कर रहे हैं तो एज ऑब्जर्वर कर रहे हैं विदाउट इंटरफेयरिंग, एंड देन so many recording equipments can be used, और जैसे कि कैमरा है, ऑडियो रिकॉर्डर्स हैं वगैरह वगैरह, तो वो इंटरफेयर नहीं कर रहे होते जो लाइक वट एवर द प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन। डिसएडवांटेज ये है कि ऑब्जर्वेशन कैन बी टाइम इंटेंसिव, समटाइम यू नीड लॉन्ग पीरियड ऑफ फील्ड वर्क, ताकि आप उस सारा जो जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें आप इमर्स कर जाएं और आप लोगों से, जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ आप रेपो बिल्डिंग कर सकें, तो यस दिस कैन बी टाइम इंटेंसिव। फिर एक्सेस कुड बी एन इशू, फॉर एग्जांपल एक स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एक्सेस के हवाले से आपको बहुत से लोगों से जो है ना यू नीड टू गेन परमिशन एंड एक्सेस टू ऑब्जर्व देयर साइट्स। Participant observation, on the other hand, allows researcher to become involved in the setting which they are studying. Uh, जैसे अगर एक सेटिंग फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की है, तो रिसर्चर स्टडीज स्टूडेंट एंगेजमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग, सो they actively participate, they mean like the researcher जो data कलेक्ट कर रहा है, they actively participate in English language classroom. So researchers are not just observing, they are taking on the role of a teacher assistant maybe. They help students with activities, and they answer their questions. So they interact with both the teacher and student. Advantages participant observation के ये हैं कि it provides deeper insight into that social educational dynamic, and it facilitates rapport building which leads to the collection of richer data. Disadvantages का ये है कि ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट चाहिए, और इसमें रिस्क ये है कि यू गो नेटिव, जहाँ विच मीन्स आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी लूज कर देते हैं और आपका सब्जेक्टिव एलिमेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है।